हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ नंदिता जी जुड़ गई हैं, अमेरिका से हैं और मेरे रुद्रा वैदिक एकेडमी की बहुत प्यारी सी मेंबर हैं। नंदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। Hare Krishna Guruji, I'm so happy to be here. थैंक यू। सो नंदिता जी, आज किस विषय पे, व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस टुडे? Guruji, it, I would love for you to explain and guide us. Once again, you've done such a wonderful job in telling us how we can take these days that are coming up. They're so spiritual, and the month of Kartik is coming up. And as a child, I've only known this month as Diwali and gifts. But um, under your guidance, I've been so much more spiritual, and I would love for the audience to even find out what's the significance. What are some of the things that we should all do, other than eating a lot of laddus and celebrating Diwali? Yeah. So Okay, it would great. be great to hear from you. That's a very pleasant, very nice question, Nandita ji. देखिए, कार्तिक मास इज वन ऑफ द मंथ्स जो आपको भक्ति और ब्लेसिंग्स में एक इस लेवल पे लेके जा सकता है दैट यू कांट इवन इमेजिन। मुझसे कभी किसी ने पूछा, नवनीत सर, पुरुषोत्तम मास भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है और कार्तिक मास की इतनी महिमा है, सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन कार्तिक मास। सो विच इज मोर पावरफुल, is it the Right. Purushottam Mass or it is the Kartik Mass? So Kartik Mass is actually the energy of Radha Rani. Yes, Okay. I heard that. Yeah. Yeah. And she's also called Kartike Devi, right? Because she was, born. So the mother of Radha Rani was Kartika Devi, right? So she's also called Kartike Devi, and now there is a competition between Krishna and Radha. So if Radha. you ask me कि पुरुषोत्तम मास ज्यादा strong है या कार्तिक मास, so if you have a competition, so who will win? If you I have a think they're competition. equal. Mhm. Equal, because See, Radha holds Krishna's love. So, see, and she gives it freely. exactly. So if Radha holds Krishna's love, so Krishna will surrender, right? So Krishna Yes. will give up. So Yes. Radha will always win in any competition if you have between Krishna ji and Radha ji, right? So Radha will Yes. come out as a winner. Krishna will give up, right? Because Yes. भगवान कृष्ण उनके सामने give up कर देते हैं जो उनको बहुत प्यार करते हैं, Jacob. Yes. right? If like So you true. also, if somebody really loves you, even you will give up. You'll not try to win from that Yeah. person. It's that simple. Yes. Right. Yes. Yes. So Kartik Mass is more, powerful, and it is more important than the Purushottam Mass also. Okay. And this Radha Rani, the name of Radha Rani is also the Urjashwari Devi. Okay. Urjashwari Devi means that, it gives you energy. जो राधा Right. एक वर्ड है ना, right? राह दे, राधा, giving you passages, giving you right path, in your life. So that Right. energy that you get, urja, that is why it is called Urjashri Devi, right? You Right. get in this particular month. There are some set of activities that you should do, right, in this month, which can lead you to the finest paths of your life, which I'll be explaining in this video as well, right? So that is That's the the, exciting part. yeah. Right. So that's the another important thing. Now there are several festivals in this mass. Now why this is called Kartikeya mass is another astrological reason is when we'll have the Purnima of this month. Okay, so Mm. इस महीने की जो पूर्णिमा 19 नवंबर 19th नवंबर को आएगी, आप चेक कर सकते हैं। उस दिन चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में होंगे. So moon will Wow. be transiting in Kritika. So this principle I have explained in my previous videos also, that एक महीना तब देखा जाता है जब चंद्रमा एक पूर्णिमा के दिन एक पर्टिकुलर नक्षत्र में जब होता है, उस नक्षत्र के नाम से महीने का नाम रखा जाता है. So this is the Kartik Mass. This is the astrological reason of this month called Kartik Mass, or because it has come from Kritika. Now the third thing is that you have so many festivals
in this mass. Yes. The biggest festival obviously is Diwali. Okay, Yes. Diwali is the Maha festival of India, right? Because उस दिन राजा राम जो है Came घर home. वापिस आए थे, right? And Yes. it was a great celebration. This is also called Damodar Mass. भगवान कृष्ण ने इस महीने में बहुत सारी लीलाएं की हैं. उसमें से Yes. एक लीला है दामोदर मास की, जिसमें भगवान कृष्ण अपनी माँ से बंध गए थे. So She tied दाम, him up because, yeah, yeah, yeah. So दाम yeah. का मतलब होता है रस्सी. दाम means रस्सी. Okay. Let's see. धर is the waist. So दामोदर. Right. तो उन्होंने वेस्ट से उनको बांध लिया था, और जिस दिन बांधा था उस दिन दिवाली थी. Right. So Oh, so that is also a लीला of भगवान कृष्ण. तो इसको दामोदर मास के नाम से भी जो है जाना जाता है. Right. And this is also called Govardhan Mass. Govardhan Mass is 7 days and 7 nights. भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को धारण कर लिया था. राइट. सो इस दिन इस मास के अंदर गोवर्धन परिक्रमा भी होती है. आप गोवर्धन right. के वृंदावन जाकर आप गोवर्धन की परिक्रमा भी जो है इसके अंदर कर सकते हैं. इस महीने में गोपाष्टमी भी आती है. राइट. सो Yes. गोपाष्टमी इज ओकेजन जब भगवान कृष्ण अपनी प्यारी प्यारी गाय को घुमाने Go. के लिए ले गए थे और चराने के लिए Right. ले गए थे. तो इस महीने में गोपाष्टमी का भी जो है वो एक एक त्योहार जो है मनाया जाता है. लास्ट ईयर मैं गोपाष्टमी के दिन वृंदावन में था, और वृंदावन की सबसे बड़ी गौशाला में मुझे गाय को प्यार करने का और गाय को चारा खिलाने का मौका मिला था. और मेरे फ्रेंड गोविंद कृष्णदास और अतुल जी, हम सारे इकट्ठे थे. उन्होंने बहुत एंजॉय किया था लास्ट ईयर इन You're so lucky. You're so राइट. lucky you go there. Yeah. राइट. और इसके बाद भोलाष्टमी भी इसी महीने आती है. भोलाष्टमी में जब राधा कुंड और श्याम कुंड जो हैं वो प्रकट हुए थे नेचुरली. सो यहाँ पर Right. भोलाष्टमी भी इसी महीने जो है गाई जाती है. देव उत्थान एकादशी भी इसी महीने जो है वो कार्तिक मास में ही आती है. तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से भी जो है इसी This month. Yeah. दिस मंथ में ही जो है वो हुआ था. सो Yeah. सो मेनी ओकेजन्स. नरका चतुर्दशी भी इसी महीने आती है. भगवान जी ने नरकासुर का जो वध किया था वो भी कार्तिक मास पे ही किया था. धनतेरस Yes. भी इसी महीने आती है. राइट. जब Yes. सागर मंथन हुआ ना, तो भगवान उस Yeah. समय धनवंतरी के रूप में जब है वो बाहर ही It- केम but in the form of with the धनवंतरी. emerald. Yeah, Yeah. To and with bring the the emerald. औषधि, with the medicine, Yeah. that he came. Yeah. So धनतेरस भी यहाँ पे आती है. दीपाली जो है दीपावली जो है वो भी इसी Yes. महीने में आती है. तो इतनी सारी चीजें हैं जो इस कार्तिक मास में आती है, जो इसको बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस बनाती हैं. राइट. सो नाउ यू कैन count things. I've told you 10 things that are there 10 things. you know Yeah. in That's the why I Kartik asked. Mass. There's so many big events and Yeah. so many important, significant events Yeah. all in this month. Yes. So how do we go about it? How do we do the right rituals? Yeah. Because it's easy, Yeah. you light the divas and you do the Lakshmi Yeah. Puja. That's Yeah. the easy stuff that we've been Yeah. doing. Yeah. But there's some very important, significant. It is also the month where you can really do your sadhanas, and you should double Yes. the sadhanas because you get the Yes. most out of it. So Absolutely. that's the guidance that I want. Yeah. So I'll give you What can we do? absolutely. I'll give you like 5, 7, 10 different suggestions and guidance that these are the guiding points that you should do. The first thing that you should do is to remain vegetarian. Okay, this Yes. entire month. Right. I understand that people living in the western part of the world, it is extremely difficult to be vegetarian all the time. But if you are a Krishna devotee, right, in India here we give up onion garlic also, just like we do it in Yes. Navratras. Right. Right. Lot of people fast on the Kartik Mass, lot of people. Right. But if you cannot fast, because since you told that we are in a culture where we have to work 11 hours, 12 hours, there's a lot of workload and there's a lot of pressure. Right. So just remain vegetarian. Right. Right. That is one. The second thing you can do is
you can leave one of your favorite things for a month if it's possible. This is also written in the shastras, right? For an Right. example, if I like tea the most or the coffee the most, I am really inclined towards having tea at least twice or thrice a day. Or you cannot live without a particular sweet or a fruit or something like that. Try Right. to just keep vrat of that favorite thing, right? Try to Right. just leave it for a month and dedicate Yeah. it. And in the last day of the Kartik Mass, you can call Brahmins, and the thing that you have left for 1 month, you can give that thing in Give the them. Prashadam, and make sure that thing is a vegetarian thing, that thing Right. is a sattvic thing, because and it is your favorite, and you have to leave it for 1 month, and you have to give prasad to the Brahmins, for the same, Yeah. right? Right. And also, if you have any sort of addiction, like people smoke or people drink, or even tea and coffee is also a addiction, right? Addiction. Right. Yeah, so if you can quit these addictions, last month I was in Vrindavan, and in Vrindavan, in the Iskon temple, there is a shop outside in fact inside the Iskon temple, where you get the coffee. Okay, so वहां से कॉफी मिलती है, and that coffee doesn't have any caffeine or nicotine. It tastes like coffee. I've bought 2 big jars of that. It is fantastic. और आपका किसी तरह का addiction भी आपको feel नहीं होता है. So if you go to Wow. Vrindavan, if you go to ISKCON, you can get those coffees and tea. वहाँ पे चाय भी है ऐसी जिसमें nicotine नहीं है, right? Right. So any sort of addictions, because why we give up addictions is because जो भी आपको भगवान कृष्ण से दूर करता हो, जो चीज Mm. आपको ज्योतिष से दूर करती हो, आपको उसको अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का खाना ही क्यों ना हो, right? For Right. like, if you eat non-veg food, or if you eat anything which is very very tamasic in nature, right? But Right. after doing that, you don't feel close to Krishna, right? You should give up that particular thing immediately in your life. If you do that, you will feel very, very good. 16 rounds of Krishna Maha Mantra. This you should do. Very simple, right? You should get up in the Brahma Muhurat, right? Brahma Muhurat, Yes. एक मुहूर्त जो है वो 48 मिनट्स का होता है. ब्रह्म मुहूर्त 2 मुहूर्त पहले सनराइज के, right? So if sunrise is happening at 6 in the morning, so like 96 minutes before, which is 1.5 hours, before, which Right. is 4:30 in the morning, right? You Right. should get up and take a shower. Okay, and Yes. if you take a shower, it gives you equal, you know weightage that you go to Gangaji and take a shower. Exactly the Yes. same, because for people in the western part of the world, we don't have Ganga. And in India also, because of few restrictions, everybody is not able to go to Ganga Maiya, Go there. राइट? और इस समय तो Yeah. गंगा मैया इतने उफान पे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी बारिश हुई है और इतना Yeah. ज्यादा पानी है वहां पर, बहुत फ्लो है. सो आप सुबह सुबह उठकर नहा धोकर, राइट, एंड अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में आप शावर ले लीजिए, राइट? इसके अलावा आप दीप दान भी कर सकते हैं. दीप दान का मतलब क्या है कि दीपक जलाना, राइट? सो दामोदर रूप की एक फोटो लेकर आइए. दामोदर रूप में माँ यशोदा खड़ी होंगी, और उन्होंने कृष्ण जी को रस्सी से बांधा हुआ होगा. तो Yes. दामोदर स्वरूप आप लेकर आए, और उस स्वरूप के सामने आप दीपदान करें. दीपदान के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा. The first one is कि every day the deepak that you're going to lit in front of Damodar ji or Krishna ji, it should be a new deepak. तो वो मिट्टी के दीपक, आप 30 दिन है तो 30 मिट्टी के नए दीपक ले आइए. हर रोज नया दीपक आपने जो है जलाना है. और मान लीजिए ये कृष्ण भगवान जी की, दामोदर जी की एक प्रतिमा है. यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं. उनके चरणों पे 4 बार, 4 times, 1, 2, 3 and 4, 4 बार चरणों पे उनके दीपक करना है. उसके बाद 2 बार नवल होल पे, नाभि के आसपास, ट्वाइस. ओके. उसके बाद आपको 3 बार उनके मुख के सामने दीपक करना है, और 7 बार पूरे इस तरह से करना है. ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है. This is a special way of doing a deep dan, in this Right. month, right? In the Damodar month. इसके अलावा बहुत सिंपल भी कर सकते हैं. हर एक घर में तुलसी होती है, तो रोज शाम को
राइट, सूर्य अस्त के बाद तुलसी जी के नीचे एक दीपक जो है, पौधा जो है उसके नीचे आपको दीपक जो है जलाना है। इससे भी बहुत 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 लाभ मिलेगा, राइट। Right. देखिए बहुत सी ऐसी क्लासिक्स में लिखा है कि इस दिन आपको भागवत गीता पढ़नी चाहिए इन महीने के अंदर। Mm. अगर आप एक श्लोक पढ़ते हो भागवत गीता का इस पूरे महीने के अंदर और उस श्लोक को समझकर अपने जीवन में अप्लाई करते हो, आपको सभी वेद पुराण पढ़ने का फल मिल जाता है, सिर्फ I एक have read श्लोक that. पढ़, Yes, जस्ट I वन, read that. राइट। और अगर आप भगवान की परिक्रमा करते हो, गोवर्धन परिक्रमा, तो एक एक कदम से आपको 100 अश्वमेध यज्ञों का जो है रिजल्ट आपके जीवन में मिल जाता है। ये इतना ऑस्पिशियस मंथ है, कैन यू बिलीव Right. दिस, It राइट। That's why I wanted to ask, because I was reading and I said there's so many things to do and यस, we don't want to do it incorrectly. यस, So this is amazing. This is great. This is या, the exact guidance I was looking for, and I'm sure the या, viewers will appreciate it because there are so many rituals, and यस, sometimes we just they've been followed for generations and generations, and sometimes यस, I think a lot of us don't even realize why we're doing them, राइट, राइट, but it's राइट, great to find out. Yeah, यस, so यस, thank you very much. This was थैंक यू, amazing. Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू I hope नमिता it's जी। helpful for everyone. Yeah, and thank you for coming on the channel, right? And I am Yes, sure that absolutely. it is like 10 in the morning here, it is midnight out there, and thank you so much, Yeah, right, no for problem. being there. And a lot of blessings to all my viewers and happy Kartik Mas. And इसका पूरा फायदा ले लीजिए, right? 100% डिस्काउंट है, right? और सेल लगी हुई है blessings की, right? So 100% डिस्काउंट के साथ है, go get them. This is the month to get all the blessings. All right. So we'll Yes. come up with another video, and do share this video, because if you will share this video, if it reaches someone else and he does it, आपको भी उसका श्रेय अवश्य मिलेगा. You'll get the benefit for it, right? So I'll come up with another video. Thank you, Nanita ji. Till then, Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna.